वेलकम टू वानिक। तो देखिए आज हमर इंग्लिश क्वेश्चन सब केमती आसला। फर्स्ट ऑफ ऑल केमती को वे रे सॉल्व करिवा कोन करिवा। ओके, आफ्टर दैट कोन ता रहूची बेसिक कांसेप्ट सब को बेसिक कांसेप्ट ऊपर हम ताको अंडरस्टैंड करिवा। ओके, ईच एंड एवरी पॉइंट को हम अंडरस्टैंड करिवा केमती इजीली जिन छोटा सॉल्व हो परिबो। नाउ कम टू द क्वेश्चन डायरेक्टली एंड हियर इज द क्वेश्चन फॉर यू। Read the following two passages and answer the items that follow the passage. Your answer to these items should be based on the passage only. In our country, regrettably, teaching and learning from the examination have been our fortes, but the new demands of society and the future of work requires critical and independent thinking. Learning through doing, asking questions from multiple disciplinary perspectives on the same issue, using evidence for building arguments and reflecting and articulation. Higher education should not either be more servant of the government policy or a passive response to public mood. Higher learning is all about how to think rather than what to think. तो एटी जो हमें पॉइंट यूज करूचे पैसेज रे, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। लास्ट टू लाइन सब फॉलो करिवो। कंडीशन कोन कहूची ना, the higher education should not either mere servant of government policy or a passive respondent public mood. Higher learning is all about how to think rather than what to think. Teaching has to be invented. सेठी कोन कहूची, एटी पैसेज का को इंडिकेट कहूची ना, जो एटी कांसेप्ट हमर कोन कहूची ना, जो पैसेज अछि एटी केमती हमें गवर्नमेंट रो जहां भी एजुकेशन सिस्टम अछि हम केमती ताको न्यू वे रे फॉर्म करि परिबा। ओके, से वे रे क्वेश्चन हमर अछि, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बोथ रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया कन्वेड बाय द पैसेज। एटी सेंट्रल आइडिया कोन शो करूछ ठीक हम अंडरस्टैंड करिबा। सेंट्रल आइडिया को हमर the India does not have enough resource to permitting equality education in its university. जदि सेंटेंस रे मन को सबले एलिमिनेशन रूल अप्लाई करिवो। आ गोटे पॉइंट कंडीशन कोन कहूची ना, जदि टू एक्सट्रीम अछि से जिंसो को कि टू एक्सट्रीम वर्ड किछि अछि से ऑप्शन सबले एलिमिनेट ही करा जाय। तो टू ऑप्शन जेम हमरा नॉट आसी गला। ओके, जदि नॉट आसी हम सिंपली एटी का को ओमिट करि परिबा, ओमिट करि परिबा ऑप्शन ए को। The institution of the higher learning in the country should not be under the control of the government. एटी कोन कहूची, should not be under the control of the government. Into higher learning आसी गला कंडीशन ओमिट ही जीवो। Classroom approach to higher education should be done away with. तो एटी भी कोन आसी गला, कैंसिल हे गला। कोन बाय एटी जो नॉट यूज हेई छी ये भी कैंसिल आउट हे गला। Classroom approach to the higher education should not done away with पे एटी कोन हे गला, कैंसिल आउट हे गला। रहिला हमर कोन ना, classroom needs to be reimaged and technique needs to be reinvented. तो जो टॉप पॉइंट आसला डी तमरो आंसर। ओके, come to the next point. And here the second question, जदि हम कथा हो का अबाउट इन्फरेंस अबाउट रे कला with reference to the above passage the following assumptions have been made। को assumptions हमें बनै परिबा एठी। Higher education is a constantly evolving subject that needs to align towards new developments in all spheres of society. In our country, sufficient funds are not allocated promoting higher education. Which of the above assumptions is valid? Not use हेछि, जदि हम एटी यूज करू छै कोन नॉट यूज करू छै सिंपली हमरो चेंज ही हे जिवो। ओके, कम टू द नेक्स्ट। हियर द क्वेश्चन जल नॉट allocated यूज करू छी हम एटी कैंसिल करे दबा। नॉट allocated नॉट आसी गला, कैंसिल आउट हे जिवो। तो आसीबो कोन तमरो फर्स्ट वन आसीबो। तो ओनली ऑप्शन अछि कोठी, ओनली 2 हबनी, बोथ 2 and 3 हबनी। तो आंसर कोन आसीबो ओनली ए। तो 2 नंबर कोन आंसर आसीबो ए आसीबो। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसेज 2 मते कोन इंडिकेशन करूची। If there is inequality in the pattern of population growth,
there is a greater inequality in food production and utilization. As societies become wealthier, their consumption of animal products increases. This means that a greater promotion of such basic foodstuffs as grains and legumes that could feed humans directly is instead being converted into feed for poultry and large farm animals. Yet this conversion of plant-based food into animal food for human is far from efficient. Only 16% calories fed to the chickens are recovered by us when we eat them. The conservation rate goes down to 5 to 7%. 16% कौन होची? एटी कंडीशन कौन कहूची? ना एटी कंडीशन को कहउछि ना एटी कंडीशन को कहला देयर इज 16% कैलोरीज कम हो जे हमरो ना 16% ऑफ कैलोरी फेड टू द चिकन आर रिकवर्ड बाय अस देन सेकंड नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कोन कहउछि ना कंजम्पशन ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस कोन पाई ना देला हम कोन कहउछि नले पॉपुलेशन ग्रोथ देयर इज अ ग्रेटर इनइक्वालिटी इन फूड प्रोडक्शन दैट्स व्हाई कोन होछि एटी कंजम्पशन ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो दिस मींस द ग्रेटर a proportion of such basic foodstuff and grain legume that would be fed human directly is instead being converted into feed for poultry and large farm animals. Yet this conversion of plant-based food into animal food for humans is far from efficient. एटी पॉइंट आउट करे दोछि तमनको नेक्स्ट पॉइंट कोन कहउछि by when we eat them this conversion rate goes down 5 to 7% in large animals that are fed grain to add fat some protein before slaughter. Condition kon कहउछि ना which one of the following statement best reflects the crux of the passage तमाने तार brevity को indicate करउछि ओके बुझिबा कंडीशन कोन कहउछि एठी इंपोर्टेंट कोन अछि ऑप्शन कोन अछि there is an urgent need for the public policy to promote the consumption of crystal based food in the wealthier society तमाने एटी हम कहा को इंडिकेट करउछि ना अर्जेंट आसी गला तो अननेसेसरी टू एक्सट्रीम हे गला कैंसल आउट हे जिवो सेकंड थिंग को कहउछि ना एनिमल बेस्ड फूड इज फार लेस एफिशिएंट देन ग्रेन एंड प्लांट बेस्ड फूड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन जोरा के हम क्लियरली मेंशन अछि तो कोन आसीबो हमर सेंट्रल आईडिया हमर कोन आसी गला एटी बी आसी जिवो प्लांट बेस्ड प्रोटीन शुड रिप्लेस द एनिमल बेस्ड प्रोटीन इन आवर डेली लाइफ ठीक अछि बट नियरली करेक्ट बट दैट इज नॉट एक्यूरेट ओके Next asla inequality in the food production and consumption is inevitable in any fast changing society. तो एठी हमें कहा अबाउट रे कथा होचे ना फूड प्रोडक्शन और कंजम्पशन लाइक इनेबिलिटी अबाउट रे कथा हो ना ठीक अछि हम एठी कहा अबाउट रे कथा होचे ना स्पेशली जो माने कोन होचे ना एनिमल बेस्ड फूड इफिशिएंट अछि से रिगार्डिंग कथा होचे तो सेंट्रल आईडिया हमर कोन आसीबो एठी बी हे जिबा आंसर ओके Next asila with reference to the above passage the following assumptions have been made को assumptions that have made हे परिबो the food manufacturing and processing industry in every country should align their objectives and process in accordance with the changing needs of the society every use है cancel to extreme wealthier society tends to incur great loss of calories of food material due to indirect utilization of their agricultural product I mean that is your answer so the answer कोन आसीबो तमरो simply हम यूज करि परिबा to is your answer the only b कोड अछि cancel out so only b is your b come to the next question so it आसीबो तमरो कोन only second next point को one of the dismal realities of agriculture sector is independent India has been that is never experienced a higher growth phase unlike the non-agricultural economy. It is dismal reality of agricultural sector. Independent India has been that it never experienced higher growth phase कि higher growth phase करी नहीं unlike the non-agricultural economy. The highest decadal growth
compound annual growth rate of CAGR for agriculture has been just 3.5% in 1980s. Also, after experiencing a spurt in decadal growth during the 1980, agricultural growth suffered relative stagnation. Stagnant ko rahi jiba, stop hoyi jiba, ठीक अछि. After that, there is this stark contrast to non-agricultural growth, which consistently increased from the 1980 to 2000. Which of the following statement best reflect the corollary to the above passage? The benefit of economy reforms percolates down more slowly to the agriculture sector than in any other sector of economy. Okay, तो देखिए एटी कंडीशन कोन कहउचे हमकु ना, the benefit of the economy reforms percolate down more slowly than agriculture sector than in other sector of the economy. That is the point. Correct अछि हमरो. Next point देखिबा. For India, the green revolution was not useful as it was expected to be. एटी हम ग्रीन रिवोल्यूशन अबाउट मेंशन ही नाही किछि, त माने कोन आसीबो कैंसल अ पर्टिकुलर इंडिया अबाउट रे भी कथा हो नाही हमें. ओके, नेक्स्ट पॉइंट कोन कहउछि, इंडिया लैग्ड बिहाइंड अदर कंट्रीज इन अडॉप्टिंग मेकानाइज्ड एंड मॉडर्न फार्मिंग. एटी मॉडर्न फार्मिंग में मेंशन ही किछि नाही, तो एटी कोन हे जो तमरो कैंसल आउट हे जिवो. रूरल टू रूरल माइग्रेशन रिजल्टेड इन स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर सोसाइटी. मेंशन ही नाही, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट. तो आंसर तमरो कोन आसीबो 11. दैट इज योर A is your answer. Come to the 12th. With reference to the passage, the following assumptions have been made. The growing diversion between the fortunes of the agricultural and non-agricultural economy in India could have been reduced or contained by. तो कौन कहउचे एटी कंडीशन हमकु ना, जो हमर अछि कोन ना, विथ रेफरेंस टू पैसेज रेफरेंस अनुसार the growing diversion between fortunes of agriculture, कला एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर भीतर जो हमर कोन अछि गैप अछि, से गैप टा केमति कमी परिबो, केमति फुलफिल हेई परिबो. फर्स्ट केस कोन कहउचे ना, adopting large scale cultivation for commercial crops and viable corporate farming हेई पारे. कोन पाई ना, एटी हमें तो कॉर्पोरेट करे द फार्मिंग को आ बड़ एरिया रो प्रॉफिटेबल ताकू करैबा, ताले कोन हे पारे गोटे लार्ज मार्जिन हमको दबो, गोटे प्रॉफिट दबो, जोटा कि हमको कोन आसीबो ना, ताकू इकोनॉमी के बढ़िया पई ट्राई करिवो. ठीक अछि. प्रोवाइडिंग फ्री इंश्योरेंस फॉर ऑल क्रॉप्स एंड हेवीली सब्सिडाइज्ड सीड्स, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी एंड फार्म मशीनरी at par with developed countries. जेमिति डेवलप कंट्री मानन करे कोन करा जाउची, तांको इंश्योरेंस दिया जाउची, तो माने क्रॉप बनौचंदी सेटा रे इंडिया रे हम प्रोवाइड करबा, ताले कोन हे परिबो, ग्रो हे परिबो. एंड दैट आल्सो बी द मेन पॉइंट, जोटा कि हमर गैप हम कम करि परिबा. तो बोथ 1 and 2 हबनी. तो सी इज योर आंसर. In our country, handlooms are equated with a culture that ensures a continuity of tradition. This idea, listen, eti kon koila, handlooms are equated with culture that ensure continuity of tradition. This idea has become part of public policy farming and framing and provides a legitimate basis of the state to support the sector. But the notion of tradition as a single linear entity is being strongly contested today. Konguchi provides legitimate basis of state support to the sector. The narratives dominant in defining culture, tradition in particular way are seen to have emerged as the identity and histories of large section. The discounted and at times forcibly stifled identities are fighting of their rightful place in history. Again, this backdrop, when we promote handlooms as a traditional industry, it is not surprising that large section of our population choose to ignore. तो माने कंडीशन कोन कहउची
जो बैकड्रॉप आसिला जोटा प्रमोट करू आमे कोन हैंडलूम ट्रेडिशनल इंडस्ट्री पाइन तो एक्चुअली मेन आइडिया कोन कहूची ना जो आमे जहां भी हैंडलूम ट्रेडिशन अछि कोन पय अछि ना ड्यू टू द कल्चरल कारण आमे जो डिफरेंट वे को जिबा हमर कंट्री रो सेठी कोन आसे ना डिफरेंट वे रे डिफरेंट वेशभूषा मिलिबो ठीक है डिफरेंट ट्रेडिशन मिलिबो डिफरेंट ड्रेसिंग सेंस मिलिबो हमको तो दैट्स व्हाई हैंडलूम ऊपर हम स्ट्रेस देइछे कांसेप्ट कोन कहूची हम डिफरेंट एरिया को गले डिफरेंट हैंडलूम आसे बट लोक बे कोन करना एक्सेप्ट करना द पीपल आर नॉट ट्राइंग टू एक्सेप्ट इट ओके तो कांसेप्ट आसीबा एठी कोन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रीजनल मैसेज conveyed by the author of the passage. We need to free the handloom industry from the limited narrative linked to pursuing cultural heritage. Next asla continued state support to handloom industry ensures the preservation of some of our glorious art forms and old traditions. A household unity of the handloom sector should be modernized and made an economically viable organized industry. Handloom products need to be converted to machine made designer products so as to make them more popular. So the concept कहूची कोन मतलब हम कथा होतो कोन continued state support to handloom industry ensure the preservation of some of our glorious art some आसीगला some of नहीं एडी का बाउटर कथा होछ आमी ओके continued state support to the handloom industry ensure the preservation of some of our glorious art forms and old tradition. Continue support दरकार नहीं एठी कंडीशन कोन कहूची दैट्स व्हाई एठी कोन हे गेला हमर ओमिट आसी जीवो चकी लगैली बी household unity of the handloom sector should be modernized and made be economically viable. Economically it should be modernized जोड़ा हे पारिबो कैंसिल हला ओके जेहेतु टू एक्सट्रीम हे जाउची द नेक्स्ट पॉइंट कोन कहूची
हम एटी कल्चरल कंडीशन अबाउट रे कथा होचे दैट्स व्हाई एटी कोन हे परिबोनी हाउ एटी कोन हमर शुड बी मॉडर्नाइज्ड एंड इकोनॉमिकली वायबल हे परिबो नाही handloom product need to be converted to machine made design products so as to make them more popular तो एटी कंडीशन कोन कहूची एटी हैंडलूम को मशीन नो सेंस ही आसुनी मशीनरी अबाउट रे जेतो हम कोन कले ताको ओमिट कले तो आंसर कोन आसीबो हमर फर्स्ट वन है आंसर we need to free the handloom industry from the limited narrative linked to preserving cultural heritage हम एटी का अबाउट रे कथा होचे ना हम कल्चरल हेरिटेज अबाउट रे कथा होचे केमिति हमर कल्चर थ्रू द हम हैंडलूम ग्रो होबो से रिगार्डिंग कथा होचे तो दैट्स व्हाई एटी कोन आसीबो ओमिट ही जीवो दुरे के हमर एटी कैंसिल ही जीवो ओके नेक्स्ट आसो with reference to the above passage the following assumptions have been made को assumption हमें कहि परिबा there is no need for the state to be involved in any manner in the handloom sector next आसिला handloom products are no longer appealing and attractive in rapidly changing modern world which of the above assumption is valid कंडीशन को कहूची कोटा वैलिड नो नीड आसी गला एटी यदि नो नीड आसीबो एक्स टू एक्सट्रीम हे गला कैंसिल आउट तो रहिबो कोन हमर ना सेकंड टाइप हमर कोन कंडीशन कहूची देखिबा सेकंड को कहूची ना हैंडलूम प्रोडक्ट्स आर नो लॉन्गर अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव इन रैपिडली चेंजिंग मॉडर्न वर्ल्ड कहला अट्रैक्टिव सते नाही जोटा के हमर पैसेज इन्फर करूची त माने कोन आसीबो ओनली 2 तो बी इज योर आंसर बाकी सब कोन हे जीवो चके ही जीवो कैंसिल हे जीवो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन Next point also, each side in India faces a distinctive set of challenges regarding the impact of warming, but also offers its own set of opportunity for reducing emission depending on its natural resources. For example, coast states need to take action to protect their source from sea level rise, distinct that are dire need to prepare for variable monsoon precision. So Himalayan region have their own unique challenge and selected part of the peninsular India and offshore areas offer great opportunity for human harness wind power. These various aspects need to consider for developing clear and sustainable goals for the future. तमारे इटी कौन कहे पे चाहूँ जो पैसेज समझूँ the passage here talking about the different problems or different challenges according to the different state and different geographical location of our country. तो इटी condition हमें देखियो main idea कौन ना हमारा जहाँ भी different geographical location अच्छी हमारा इंडिया रो whatever जहाँ भी अच्छी लोकेशन सेठी कोन अच्छी कंडीशन ना केमिति से माने चैलेंज को फेस करूछन या को वेर चैलेंज को फेस करि परिबे दैट इज द मेन आईडिया ऑफ योर पैसेज कांसेप्ट कोन कहूची देखिबा कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल रैशनल एंड प्रोग्रामेटिक मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज द मिटिगेशन एंड एडाप्टेशन स्ट्रेटजीज to address or tackle the climate change is essentially the responsible of each state. तो जो टर्म यूज करूचे हमें कौन तो कंडीशन कौन कहूँ जेहेतु हमें कौन टर्म यूज कर देली mitigation and strategy address to tackle climate is essentially the responsibility is each state or the responsibility नुह कारण different state अनुसार different condition आसे समस्त मैटर responsibility नुह that's why कौन है जो तमरो ए ओमिट हे गला come to the next point b कौन कहूची India is too diverse too wide usual extreme रो केस आसी गला cancel out हे जीवो it is basically the responsibility of union government to implement the climate action plans and ensure not zero emission about rebeti kotha honi okay तो cancel out he jibo next point asla India needs to formulate effective climate change mitigation and adopt strategies for the state and regional level तमन d होब आंसर जोड़ा कि तुमको कहिल तमन को कारण डिफरेंट स्टेट रो
डिफरेंट रोची कोन प्रॉब्लम जेतु डिफरेंट प्रॉब्लम रोची ताकू नै कि हमको सॉल्यूशन करिवार अछि तो दैट्स व्हाई कोन आसला कंडीशन इंडिया नीड्स टू फॉर्मुलेट इफेक्टिव क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडॉप्टेशन स्ट्रेटजीज at the state regional level माने स्टेट प्रत्येक स्टेट अनुसार हम कोन करबा तार फाइंड आउट करबा ठीक है तमन आंसर कोन आछो तमरो डी इज योर आंसर बाकी कोन सब टू एक्सट्रीम की जिंस अछि मेजॉरिटी केस रे टू एक्सट्रीम जिंसटा सब कोन हे जाय पैसेज रे एलिमिनेट हे जाय तो ठीक है ध्यान दबो किछि वर्ड जोटा यूज करा जाय बेसिकली कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन with reference to the passage the following assumptions have been made green energy production can be linked to integrated with the climate change mitigation and adoption strategies next point kon asila effective of climate change are much more severe in coastal and mountain region बुझिबा टिके कंडीशन कोन कहउछि हमको एठी तो एठी जो टर्म यूज हेछि कोन ना effects of climate change are much more जो much more हे गला एठी कोन आसिला एक्सट्रीम एठी much more केस ही नाही एक्सट्रीम रो केस ही नाही नॉर्मली हमें कोन शो करूचे ना गोटे पर्टिकुलर रीजन न कोन थाई पारे कोन सेठी ता डाइवर्सिटी कोन थाई पारे तो दैट्स व्हाट कोन हे जिवो कैंसल आउट हे जिवो तमर आंसर कोन आसीबो ओनली वन आसीबो बाकी सब एठी कोन हे जिवो ओमिट हे जिवो का कोउटी एठी कोन ना मच मोर सेंस आसुनी कोउटी एक्सट्रीम रो सेंस आसुनी नॉर्मली हमर कोन सेंस ना कोन प्रॉब्लम अछि से प्रॉब्लम को हम केमति करबा ना आइडेंटिफाई करबा ता पय केमति क्योर बाहर करि परिबा दैट्स द मेन आइडिया ऑफ योर पैसेज ओके कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन in the social inequality is the most acutely felt social problems in India. Inequality is the most acutely felt social problem in India. Insecurity more than poverty. Insecurity amar kon achi more than poverty is the most acutely felt economy. Most acutely felt economy problem. Besides those below the official poverty line, besides those below the official poverty line, even those over the poverty line are subject to multiple economy insecurities of various kind due to wealth and or wealth risk, market fluctuations, job related concernities. Many government policies are actually intended towards mitigation these insecurities ता माने कोन ना जो माने एटी कंडीशन कोन कहउछि ना एक्चुअली जो इनइक्वालिटी अछि सोशल इनइक्वालिटी अछि एटा कोन प्रोड्यूस करूछि ना इनसिक्युरिटी प्रोड्यूस करूछि जोटा को हम एटी इरेडिकेट करि परिबा डिफरेंट वे अप्लाई करि परिबा ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रिटिकल मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज India's political executive should be aware that poverty and social inequality and the consequent sense of insecurity is the main social problem. जो term एटी यूज करछु कोन हमरो ना सिगला main social problem तो जो main social problem नुहा हमरो but एटी point out करै छी तो that's why it too extreme cancel हैला in India poverty is the primary reason for social inequality and insecurity तो कहला in India poverty is the primary reason नुह कैंसल हैला कोन पाइ ना लोक मान जोना बिलो पॉवर्टी लाइन अछन से माने फेस करछन जिंस को poverty and social inequality are so intricately linked that they pose an unmanageable crisis for India. then asila तमर कोन unmanageable crisis हबो नाही that's why एटी कोन आसी गला कैंसल हे गला हमरो insecurity more than poverty is the main economy issue that government policies must address. That's the point and that is your answer. Insecurity कोन ना more than poverty is the main economy issue because जो माने poverty line ऊपर अछंदी समाने जिंस को फेस करछंदी that's why तमर कोन आसिला D is your answer. बाकी सब कोन हे जो तमर कैंसल आउट हे जो कोन भाई ना due to the extreme sense. With the reference to the above passage, the following assumptions have been made. The people above the poverty line also are prone to suffer more anxiety about economic insecurity.
Eradication of poverty can result in peace and social equality in the country. देखिए कंडीशन कौन कहूची फर्स्ट वन का इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी कैन रिजल्ट इन पीस एंड सोशल इक्वालिटी कहले पॉवर्टी इराडिकेशन अबाउट रे कथा हो ना है तो दैट्स व्हाई कोन हला टू कैंसिल रोइला कोन तमरो फर्स्ट वन तो आंसर कोन आसीबो ओनली वन बाकी सब कोन हो रिजेक्ट कोन में रिजेक्ट हला ना एटी हम कहा अबाउट रे कथा होनी पॉवर्टी रो इराडिकेशन अबाउट रे कथा होनी कारण हम एटी इनसिक्योरिटी अबाउट रे कथा होचे मेन आईडिया हम कोन शो करूची दैट इज द इनसिक्योरिटी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट सबले पैसेज बनाउछो माइंड रे जिंस रखिबार अछि हमको ना सबले एक्सट्रीम जिंस को ओमिट करिबा जहां मेन आईडिया टू टिके डिफर हेतिबो से जिंस को हम ओमिट करिबा सब जिंस को एलिमिनेट करि साला परे हम आंसर करिबा आ वन ऑफ द बेस्ट वे टू सॉल्व द पैसेज इज एलिमिनेशन तो हम मेन पॉइंट को धरि कि हम कोन करि परिबा एलिमिनेशन करि परिबा जे एलिमिनेट हम करि परछो परफेक्टली ताले ऑटोमेटिकली जिंस कोन हेजिबो ठीक हेजिबो ओके तो पॉइंट आसन maintaining an ecosystem just to convert biodiversity will affect its commercial potential as well as the livelihood dependent on the ecosystem. There is also a conflict between using an ecosystem only for livelihood. For eti kon dekho pehla maintaining the ecosystem just converts biodiversity will affect the commercial potential okay as well as livelihood dependent on ecosystem. There is also conflict between using an ecosystem. Ecosystem use karibar kon अछि na conflict अछि only for livelihood and commercial exploitation will lead to indirect harm like flood situation problem and microclimatic instability apart from adversely affecting livelihood dependent on forest. This conflict are particularly acute in developing countries. Acute in developing countries where the dependence of people on the ecosystem is significant. Where the dependence of people on the ecosystem is significant and the commercial exploitation has the potential to boost the national income. Okay? बुझिबा टिके कंडीशन कोन कहूची Which of the following statement best reflect the critical message conveyed by the author in the passage? Critical idea कौन provide करूची first one कौन कोइची हमको conservation of biodiversity is not an issue ना it is the issue not कोई दला cancel हो गला commercial exploitation of forest goes against the fundamental rights of the people dependent on forest for food and shelter क्लियर कहा about रे कथा होची Now the commercial exploitation on the forest goes against fundamental rights. कहले fundamental right against रे नहीं, okay? On the forest for the food and shelter, sustenance of livelihood and degradation of ecosystem while being together exacerbate one another, leading to conflict and imbalance. Commercial exploitation of ecosystem should be completely stopped. should be completely extreme हे गला आंसर हमरो तो हबो नाही तो आंसर के हबो सी बाकी सब कोन हे गला हमरो completely reject हे गला हम रहिला के आंसर सी तो दैट्स व्हाई सी इज योर आंसर अब एटी मेन आईडिया हम कोन कहूची ना हम इकोसिस्टम कोन कहूचे मेंटेन करूचे जमदी कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन न होबो with reference to the above the following assumptions have been made no country needs जो टर्म यूज कला कोन no country needs हम जो टर्म यूज करूचे फर्स्ट थिंग no country हबो नाही मेंशन अछि कंट्री अबाउट no country needs to depend on ecosystem to boost natural income हबो ही नहीं resource rich countries needs to share the resource with those of scant resource so as to prevent the degradation of ecosystem तो एटी मेंशन नहीं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट तो 1 and 2 होबो नहीं आंसर कोन आसीबो neither 1 nor 2 तो दीटा अंक गोटे हला हमर कोन आसी जाउची मेंशन ही नहीं आ गोटे कोन टू एक्सट्रीम हे जाउची कम टू द नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन the history of renewable every suggest there is a steep learning curve meaning that as more is produced
cost fall rapidly because of economies of scale and learning by doing. The firm's green innovation is path dependent. Green innovation कौन कहूची ना path dependent. Okay. Next one कहला the renewable every suggests that there is a steep learning curve, meaning that there is more produce, cost fall rapidly because the economic scale learning by doing. Next one कौन कहूची the more a farm does, there more it is likely to do in the future. The strongest evidence, the evidence कौन कहूची is the collapse in the price of solar energy, which become about 90% cheaper during 2010, repeatedly beating forecast, moving early and gradually, giving economies more time to adjust, allowing them to reap the benefits of path dependent green investment without much disruption. A late more chaotic transition is costlier. Okay, देखिए एटी कंडीशन कौन कहूची जो टर्म एटी यूज करछि कोन the moving early and gradually gives economies more time to adjust, allowing them to reap the benefit of path depending green investment without much disruption. A late more chaotic transition is costlier. ता माने एठी टाइम अबाउट रे कथा होची कहले टाइम कोन एठी ना पाथ डिपेंडेंट अब टाइम और पाथ डिपेंडेंट अबाउट रे कथा होची केमिति टाइम और पाथ डिपेंडेंट हेकी उड जिंस कोन होची ग्रो होची कहले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज economies of scale is essential for transition to green growth. सेकंड आसला कोन हमरो economies of scale is essential for transition to green growth हबो नाही out of the context. Modern technological progress is intensely linked to path dependent innovation. तो ये भी कोन हमर एटी केस कंडीशन कोन कहूची ना एटी मॉडर्न टेक्नोलॉजी अबाउट रे में कथा ही होना है. Countries with large economies are in a better position to adopt green technology. जोटा कोन large economies हबो नाही. Next आसला कोन timing plays a crucial role in the case of green technology development. ता माने टाइमिंग जोटा कि मोस्ट कोन क्रुशियल पॉइंट तो से अबाउट रे में कथा होची तो टाइमिंग अबाउट रे कथा जोटा कि हमर डिमेंशन होते लास्ट लाइन है मूविंग अर्ली एंड ग्रेजुअली गिव्स इकोनॉमीज मोर टाइम टू एडजस्ट अलाउइंग देम टू रीप द बेनिफिट ऑफ पाथ डिपेंडेंट ता माने ठी कोन ना टाइम एठी कोन करछि प्ले करछि क्रुशियल रोल तो टाइम इज इंपोर्टेंट द मैं सेंट्रल आइडिया का अबाउट रे कथा होची टाइम अबाउट रे में कथा होची केमदि टाइम हमर कोन होची पाथ डिपेंडेंट होची with reference to the passage, the following assumptions have been made. Path dependent green investment will eventually most likely benefit growth as well as public finances in a country like India. First कथा जे मैं कथा हो जका about रे जेतु India mention देखिबा ठीक नेक्स्ट पॉइंट if the other green technology follow the same pattern as that of solar energy, there will most likely be an easy green transition. Okay, तमने जो टर्म यूज करूची likely कहले कोन it is the give the sense of a possibility. तमने केस कोन कहूची ना गुड जिंसर हमर पॉसिबिलिटी अछि बट हम एटी एग्जांपल नै सारी जे कहारो ना सोलर एनर्जी एग्जांपल नै सारी जे जोरा कि हेई सारी छि तो पॉसिबिलिटी रो सेंस ही आसुनी तमने टू मोर कैंसिल हे जिवो. सेकंड आसिला कोन फर्स्ट वन ने देखिबा फर्स्ट वन मते कोन इंडिकेट करोउची path dependent green investment will eventually most likely benefit growth as well as public finances in the country like India. Partially ठीक अछि. First of all India about रे कि मेंशन ही नहीं बट जदि हमें रिलेट करि पारुचे दैट्स व्हाई इंडिया को हम मेंशन करूचे. ओके बट इट कथा हमें परफेक्टली राइट नो बट इवेंचुअली एंड पार्शियली इट इज राइट. तो जेहेतु पार्शियली राइट तो कॉन्टेक्स्ट को बेस करूचे आउटा कोना पाथ डिपेंडेंट रो कंडीशन आसी गला हमरो जेहेतु पाथ डिपेंडेंट आसी गला तो पॉइंट को भी इंडिकेट करूची पार्शियल राइट बट एक्स्ट्रा पार्ट कोन अछि हमरो ना केवल इंडिया ही अछि जोटा कि इंडिया मेंशन हमर नथिला. ठीक अछि फिर भी कोन आंसर हमरो ओनली ए आसीबो बाकी सब कोन हे गला कैंसिल आउट कोन भाई ना ठीक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट अबाउट रे कथा होची और पॉसिबिलिटी अबाउट रे कथा होची एक्चुअली जोटा कि नुह.
Next also, next passage, come to the next passage. A single number for inflation is an aggregate across different commodities and services. The price rise differs for different terms of consumption. So the number of inflation is an aggregate across different commodities and service that price rise differ for different items consumption. So a single number is arrived by assigning weights of different commodities and service. For WPI, the weights in production are used. WPI में कौन use करा जाए? Weight in production are used for the CPI consumption bracket is used. Sorry, consumption basket is used. But people are not homogeneous. People are कम दोनों homogeneous नुह से माने. The consumption basket is vastly different. The consumption basket is vastly different from poor, middle class, and the rich. Hence, the CPI, the CPI is different for each those classes, and composite index requires averaging the basket. तमाने कंडीशन कौन कहूची ना समस्त नगर WPI कौन कहूची ना प्रोडक्शन जहाँ भी यूज होची बट CPI कौन कहूची ना जहाँ भी हमें यूज करू तो CPI कौन है हमारा ना जहाँ भी यूज होची लोक माना में सब क्लास में कौन ଅଛି डिफरेंट डिफरेंट अछि पोर माना ପାଇଁ अलगा आफ्टर दैट रिच माना ପାଇଁ अलगा तो समस्त में कौन आसिला अलग अलग आसिला ओके तो कांसेप्ट कौन कहूची दी कथा हमें कहा अबाउट रे ऑप्शन अबाउट रे कथा क्वेश्चन कौन कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स the most logical, rational and crucial message conveyed by the passage. We must use WPI. Must asigala. Exclusively habo nahi. The present calculation in inflation rate does not correctly measure price rise individual item commodities. तो डी कौन कहूची मते एटी partially true अछि कोन तमरो B. Inflation data under present service is the consumption basket. No, that is out of the context. C cancel हो गला. Knowledge of inflation rate is not really of any use to anybody in the country. तो टी कौन कहूची ना really what use होला too extreme cancel हो गला तो आंसर कौन आसीबो तमरो B is your answer. बाकी सब cancel out हो गला तो B is your answer. बस खाली टिके सेंट्रल आइडिया पर ध्यान देबार अछि सेंट्रल आइडिया कौन कहूची मते एलिमिनेट करिवार अछि एलिमेंट करी आंसर फाइंड आउट करिवार अछि आ बाकी जा अननेसेसरी पार्ट कौन करिवार अछि ओमिट करिवार अछि ट्रस्ट स्टैंड्स कॉमनली डिफाइंड एज बीइंग वल्नरेबल टू अदर्स एंटरप्रेन्योरशिप इंप्लाइज trust in other and willingness to expose oneself to betrayal. Trust stands commonly defined as vulnerable to others. Trust is expert system. Trust कौन है expert system is essence of globalizing behavior. Trust itself emerges as the super commodities in the social market. हम कहला एटी ना trust itself emerges as super commodity in the social market and define the characteristics of goods and service in our global market. Trusting conduct also means holding others in a good esteem and optimizing that they are or will be competent in certain respects. तमने ट्रस्ट अबाउट रे कथा होची मेन थीम कोन को तम पैसे ट्रस्ट तमने ट्रस्ट रो फंक्शन कोन ट्रस्ट केमिति बिल्ड अप हुए केमिति एंटरप्रेन्योरशिप रे ट्रस्ट वर्क करे और ट्रस्ट केमिति प्रोडक्ट ऊपर हम बिल्ड अप करे वैसे इनको शो करूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिप्लाइज द क्रूक्स ऑफ द पैसेज थीम कोन पचलला हमको ट्रस्टवर्दीनेस कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड इन एंटरप्रेन्योरशिप हमको एटी मेंशन करेला फिर दरकार बोली कैन नॉट तो हबो ही नहीं ट्रस्टवर्दी पीपल आर द मोस्ट वल्नरेबल पर्सन तो एटी मोस्ट वल्नरेबल हबो ही नहीं एक्सट्रीम को शो करेला कैंसिल हो गला नो इकोनॉमी एक्टिविटी इज पॉसिबल विदाउट बीइंग एक्सपोज्ड टू बिट्रेयल नो इकोनॉमी कैंसिल हो गला ट्रस्ट इज इंपोर्टेंट दो इट इज एंटल रिस्क थिले भी कोन मोर ट्रस्ट होची इंपोर्टेंट दैट इज योर आंसर
always try to eliminate. Okay, कौन extreme thing नहीं था को eliminate करो. Which of the following there has been no democracy that has grown economically without corporate capitalism. It helps in modernizing economy and enabling the transition from rural to urban. Agriculture, industry and service which are inevitable with growth. It generates jobs and there is no other way to fix the country's unemployment challenge without a future impetus to private business. Big companies can operate on large scale and become competitive both domestically and externally. That is very important. Kemiti na domestically au externally. A variant corporate capitalist base also lead to additional revenue for the state, which is turn can be used for great welfare for the marginalized and creating more level playing field terms of opportunity. That is about रमे कथा होचे ना एटी जो कंट्री रो इकोनॉमिकल पावर अबाउट रे कथा होचे आ एटी कोन ना कैपिटलिज्म अबाउट रे कथा होचे केमती गोटे कंट्री कोन करउची ग्रो करूची कोन भाई ना ड्यू टू द कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म. ओके आ मॉडर्न इकोनॉमी भाई केमती कोन करउची ग्रो करूची ता अबाउट रे कथा होचे. One of the following statement best reflect the critical message conveyed by the author with the passage. तमने क्या अबाउट रे कथा होची ना इकोनॉमिक वेलफेयर अबाउट रे कथा होची केमिति इकोनॉमिक वेलफेयर हेई परिबो जोरा कि ट्रांसफर हो केमिति ना इकोनॉमिक वेलफेयर ट्रांसफर हो केमिति कि एम्प्लॉयमेंट पावर को ट्रांसफर हो. Which of the following statement reflect the critical message conveyed by the authors of the passage? Corporate capitalism is important for economic growth of a state and also for democracy. जो टर्म यूज है जे बुझिबा टिके. नेक्स्ट पॉइंट आसो corporate capitalism is the imperative for modern state to achieve its political objective. तडी political objective किछि नाही आमे एटी कोन कहउछे ना कैपिटलिज्म अबाउट रे कथा होउछे एम्प्लॉयमेंट अबाउट रे कथा होउछे वेलफेयर अबाउट रे कथा होउछे. नो स्टेट आसी गला एक्सट्रीम सेंस हबो नाही. corporate capitalism and democracy have mutual dependency for their continued existence. एटी म्यूचुअली कौन करू नांदी एटी माने म्यूचुअली करू यूज हेई पारू नाही कैंसिल हे गला आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट. तो आंसर तमर कोन आसीबो ए आसीबो आंसर जेतु म्यूचुअली हेई पारू नाही आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हे गला आउट ऑफ द पैसेज. तो आउट ऑफ पैसेज मींस कंप्लीटली आउट हे जिबा हमर कांसेप्ट. विथ रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions have been made. Corporate capitalism promotes the growth of labor force and provides more employment opportunity. That is the point. जोटा कि हमको employment opportunity about रे कथा होचे कोन चैलेंज आसी गला without further impetus. त माने कोन एटा ग्रो करूची employment को. Poor and marginal sections of population are benefited by corporate capitalism due to a trickle down effect. एटी मेंशन अछि तमरो तो जेतु टैकल डाउन इफेक्ट अबाउट में कथा होची दैट पॉइंट आउट करे अछि हमर ठीक अछि. पहले पोर एंड मार्जिनल सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन आर बेनिफिटेड बाय कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म ड्यू टू टैकल डाउन इफेक्ट एडी मेंशन अछि. तो हमर आंसर कोन आसीबो बोथ 1 and 2. तो सी इज योर आंसर. दिरा पॉइंट हम कोन करि परछे इन्फर करि परछे. ओके A network of voluntary association stands as a buffer between the relatively powerless individual and potentially powerful state. आ माने कोन ना जो voluntary association हमर अछि
से माने कोन करूचंदी हेल्प करूचंदी कोन भाई ना हेल्प प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल्स फ्रीडम एंड बैलेंस पावर इन सोसाइटी बाय स्टैंडिंग बिटवीन इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट अथॉरिटी तमन जो वॉलंटरी एसोसिएशन अछंदी से माने काहा को प्रोटेक्ट करूचंदी से माने इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करूचंदी ओके का भीतर ना गवर्नमेंट आउ लोक माना भीतर जो कम्युनिकेशन होउची देखिबा एटी कोन कहूची which of the following statement reflects the best explanation of the above passage कहला कोटा बेस्ट एक्सप्लेनेशन इट emphasizes जो टर्म यूज हेची किछि एम्फासिस करोनी कैंसिल हे गला the inability of the state to enforce its will to practice against opposition and certain groups within it no cancel out it is a cooperative organization for the promotion of the well-being and development of personality and its member एटी personality member about रे कहू नाही ओके दैट्स व्हाई कोन हेला टू स्ट्रांग हे गला एटी कैंसिल हे गला हमरो it takes individuals out of the state of isolation and gives them a chance to participate in the common endeavor next asila it permits citizens to have a variety of qualities and allegiance तो डी हबो तमर आंसर सी गेला तमर कोन एटी कैंसिल परमिट सिटीजन टू हैव ए वेराइटी एंड लॉयल्टी ऑफ तमाने सिटीजन मानु परमिट करोउची जेम से माने कोन करि परिबे ना गवर्नमेंट से कोन करिवे कम्युनिकेट करि परिबे ओके It is hard to predict how changes in the climate and the atmosphere's chemistry will affect the prevalence and virulence of agricultural diseases. But there is a risk that such changes will make some plant infection more common in all climate zones, perhaps catastrophically so. Part of the problem is that centuries of selective breeding have refined the genomes of most high value crops. They are spectacular at growing in today's condition, but genetic variation that are not immediately useful to them have been bred out. This is good for yield but bad for cropping with changes. A minor disease or even an unknown one could suddenly rampage through a genetical horned crop. First of all कौन कहूची ना जो क्लाइमेट चेंज होउची आ क्लाइमेट चेंज सहित जो केमिस्ट्री चेंज होउची केमिकल चेंजेस होउची सेटा क्रॉप पाई बहुत हार्मफुल होउची आ क्रॉप पाई प्रॉब्लम होउची बट जो मॉडर्न क्रॉप हमें जो ब्रीडिंग करके बनैले एटा ठीक अछि हम नॉर्मल कंडीशन में ग्रो करि पारिबो इट कैन ग्रो इन नॉर्मल कंडीशन बट द ओनली प्रॉब्लम इज इफ द क्लाइमेट चेंजेस द एंटायर क्रॉप विल destroyed or devastated so that's the main theme of the passage global climate changes adversely affected the productivity of the crops तो टिका अबाउट रे ना एटी हबो नाही एटी डिजीज ऑफ vulnerability बाटे कथा होची our total dependency on genetical horned crop entail possible food insecurity completely mention है कि अछि our food security should not depend on cancel असगला not usual हबो नाही genetically horned crops could be replaced with either wild variety in our present cultivation practice genetically जो term use है छी then कौन कहूँ horns should be replaced with their wild variety in our present wild variety जो term use होउची replace हे परिबो नाही too extreme हे जाउची तो आंसर तमर कोन आसीबो बी इज योर आंसर बाकी सब कोन हे गेला कैंसिल आउट हे गेला
With reference to the above passage, the following assumptions have been made. Global climate change can result in migration of several plants, disease to new area. Scientific understanding of wild relative of our present crops would enable us to strengthen food security. देखिए कंडीशन कौन कहूची हमर टिका अबाउट रे कथा होचे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज कैन रिजल्ट इन migration of several plant disease to new areas. That's the correct answer, correct point. So scientific understanding of wild relatives of our present crops would enable us to strengthen food security. That is also correct. Uta food security हमर कौन करेबो correct करेबो तो दुईटा अंक ठीक हबो तो आंसर कौन आसीबो both 2 and 3 बाकी सब कौन हे गेला तमरो कैंसिल आउट हे गेला. Next point is on next passage. A good statesman, like any other sensible human being, learns more from his opponent than from his fervent supporters. Sorry. A good statesman, like any other sensible human being, learns more from his opponent than his fervent supporters. For his supporter will push him disaster unless his opponents show him where the dangers are. So if he is wise, he will often pray to believed from his friends, because they will ruin him. कौन करिवे ruin कर देवे. But though it hurts, he ought also to pray never to be left without opponents, for they keep him on the path of reason and good sense. The national unity of free people depends upon a sufficient even balance of political power to make it impracticable for the administration to be arbitrary and for opposition to be revolutionary and irreconcilably. Okay. Which of the following statement best reflect the critical message conveyed by the author of the passage? Without opposition parties, the administration. First the passage कहूची कौन मते ना गोटे भल स्टेटमेंट कौन करे ना तार अपोजिशन अबाउट सब ध्यान दे तार तो प्रशंसा बहुत जन करेंगे बट अपोजिशन तो रियलिटी शो करे कि एक्चुअली दिस इज द रियलिटी ऑफ द कॉन्टेक्स्ट. ओके से अबाउट रे कथा हुए तो मेन आइडिया देखिबा एटी कौन कहूची ना विदाउट अपोजिशन पार्टीज द एडमिनिस्ट्रेशन इन ए डेमोक्रेसी गेट्स टू बिकम मोर रेस्पॉन्सिबल. तो विदाउट कौन कहला एटी अपोजिशन विदाउट सेंस आसीबो नाही विदाउट अपोजिशन होबो नाही. डेमोक्रेसी नीड्स टू हैव रिवोल्यूशनरी इन अपोजिशन टू कीप गवर्नमेंट अलर्ट. तो जो टर्म यूज करूची रिवोल्यूशनरी तो एटी पॉइंट कहूची गवर्नमेंट कोना अगेंस्ट रिवोल्यूशन तो एटी रिवोल्यूशनरी केस आसीबो नाही. नीड्स टू हैव रिवोल्यूशन होबो नाही एटी तो आंसर कोन हिजबो कैंसिल आउट हे गेला तमरो बी. Then asiba rules in democracy need to support for opposition for their political survival. Political survival case hi asuneti amaro. In a democracy, the opposition is indispensable for the balance of political power and good governance. Sabas, that is the answer. So D is your answer. Directly passage ko kon karouchi point out karouchi.
With reference to the above passage, the following assumptions have been made. In a democracy, a strong opposition is required if the head of the government is indifferent. The most aggressive, the more aggressive, the term use है कौन? The more aggressive. So the more aggressive term use है परिवो नहीं. कौन कहले strong opposition? किसी strong opposition दरकार नहीं. Opposition रहिले भलो, but it doesn't mean the strong opposition. तू ये जो तो मैंने answer कौन आसिबो? एटा हबनी कि सेटा हबनी. So D is your answer. Sorry. The D is your answer. Okay. कथा बका about रे कहले neither both A and हबो नहीं. ये भी हबनी ये भी हबनी. तो आंसर कौन हबो? D हबो. तो जेतु टू एक्सट्रीम हे जाउछ कोन भाई? एठी जो स्ट्रांग अपोजिशन कंडीशन कहउछि हबनी मोर एग्रेसिव. दैट इज कोन हैला? टू स्ट्रांग हे जाउछि. टू स्ट्रांग हेले कोन करा जाय ताकू? एलिमिनेट करा जाय. तो आंसर कोन आसीबो? Neither one nor two. Come to the next point, come to the next passage. Always try to omit the two extreme sense by understanding the word. Word ticket janle hela. Over the next 30 years, many countries are promising to move to net zero carbon, implying that the household emissions will have to be cut off to close to nothing. A leading climate scientist reckons that at best half of the reduction might be achieved through demand side measures such as behavioral change by individual and household, and even that would require companies and government to provide more incentives to change through supply side investment to make low carbon options cheaper and more widely available. Many countries promising to move net zero carbon, implying that household emission will have to be cut to close nothing. A leading climate scientist reckons that the half of the reduction might be achieved through demand side measures such as behavioral change by individual households. Even would be required companies and government to provide incentives, more incentives to change through supply side investment to make low carbon options cheaper and more widely available. Which of the following statements best reflect the central idea conveyed by the passage? Moving to net zero carbon is possible only by reducing the household emission. So एठी जो term use करूची कोन? Only by जो term use हला एठी. बुझबाटे कंडीशन कोन कहउछु? term use is only by. Only हेले होबो नाही. एक्सट्रीम हे गला. Low carbon behavior in people can be brought by incentivizing them. जो टर्म यूज करूची बुझबा टिके एट जो मेंशन ला देखो एटी कोन कहला ना मोर इंसेंटिव टू चेंज थ्रू सप्लाई साइड इन्वेस्टमेंट मेंशन हे कि अछि. तो कोन आसीबो तमरो? बी. Cheaper good and service can made available to people by using low carbon technology. Partially true, but that is not actual true. But it is partially true. जोटा कि होबो नाही. Manufacturing industry that are low carbon technology should be provided with subsidies. Manufacturing industry about mention ही नाही. Out of the context. तो आंसर कोन आसीबो तमरो? बी होबो आंसर. सेंट्रल आइडिया कोन कहू छै तमको? बुझिले कॉन्सेप्ट? With reference of the above passage, the following assumptions have been made. Supply side investment in companies can result in low carbon behavior in people. Next is that people are not capable of adopting low carbon behavior without the investment of government and companies. देखिबाटी कंडीशन कोन डिमांड करूची मते? ये जो टर्म यूज है कोन? people are not capable. People are capable but not capable नुह. Government and low carbon without ताने कोन आसी गला? एलिमिनेट हे गला हमर ऑप्शन. तो ए होबा आंसर. ओनली ए इज योर आंसर. बाकी ऑल आर कोन तमरो? रॉन्ग आस दिबो. ओनली ए होबा कोन तमरो? आंसर. The supply side investment companies can result in low carbon behavior in people. In only 50 years,
The world's consumption of raw material has nearly quadrupled to more than 100 billion tons. Less than 9% of it reused. World's consumption raw material nearly quadrupled. More than 100 billion tons. Less than 90% of this reused. Batteries of old vehicle contain material such as lithium, cobalt, manganese, nickel that are pricely can be hard to obtain. Supply chain are long and complicated. Buyers' risk are aggravated by their suppliers being poor environmental and liberal standard. Reusing material makes sense. Once batteries reach to end of their life, they should go back to a factory their ingredient recovered and put into new batteries. Okay. अच्छा देखिए एटी क्या अबाउट रे कथा होची ना जो रीयूज अबाउट रे कथा होची जब बैटरी वगैरह अछि तार रीयूज अबाउट रे एटी कथा होचे so green economy most logical rational and programmatic message green economy is not possible without using critical minerals term कोन यूज हेची without use हेची the without use हेची cancel हे जिवो हम जानि छे not use हेची ये भी cancel हे जिवो every sector of economy should adopt the reuse material every sector नहीं जो सेक्टर यूज है पारिबो से सेक्टर नॉट एवरी एक्सट्रीम सेंस ऑफ थिंग सर्कुलर इकोनॉमी कैन बी बेनिफिशियल फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ नेक्स्ट आसला सर्कुलर यूज ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस इज ओनली ऑप्शन नहीं तो सम इंडस्ट्री देयर ओनली ऑप्शन नहीं कैंसिल हो गला तो सी हो तमर कोन आंसर स्पेशली एक्सट्रीम जिंस अछि मींस तो हमें कोन करिवार अछि ओमिट करिवार अछि यू हैव टू लर्न दैट ओके with reference to the above passage the following assumptions have been made automobile factories are example of the circular economy economic growth is compatible with circular use of mineral resources so the case कोन कहूची ना automobile factories are example of circular economy automobiles खाली नहीं other energy भी अछि automobiles factories are example खाली automobile नुह एटी cancel एटी कोन economic growth is compatible with the circular use of mineral resources so that is your answer economic growth कोन कहूची ना compatible हे जिवो को का सहित ना circular use of minerals तो आंसर कोन आसीबो only 2 बाकी अदर सब कोन हे जिवो ओमिट हे जिवो थैंक यू ऑल आई होप तुमन को बुझी जेतिबो जे पैसेज बनौचो लास्ट पॉइंट गोटे कथा कहूची जे पैसेज बनौचो सबल ए जिंस पर फोकस करिवो फर्स्ट थिंग तार सेंट्रल आईडिया कोन हमको फर्स्ट ऑफ ऑल तार सेंट्रल आईडिया को बुझिबार अछि सेकंड थिंग कोन करिवार अछि ना ता भितरे एक्सट्रीम जिंस कोन अछि टू जिंस कोन अछि टू स्ट्रांग सोलली एक्सट्रीमली विदाउट ईच यदि ए सब वर्ड यूज हेछि ता माने सब एलिमिनेट हेछि मोर ऑप्शन ओके कौन भाई ना इट इंडिकेट्स द टू एक्सट्रीम सेंस यदि टू एक्सट्रीम सेंस को इंडिकेट करोछि वी हैव टू ओमिट इट आउ कोन भाई यूज करा जाए ना जदि हमें कथा होते का अबाउट रे ना बेसिक थीम टू जदि अलग जिंस देइछि तमे जो जिंस मेंशन अछि ता छोड़ा अलग जिंस देइछि ता पर फोकस करिवार अछि से जिंस के यूज हे परिबो नाही आको हम फोकस करिया दरकार यदि बेसिकली तीन चारटा पॉइंट को हम अंडरस्टैंड करूछि आ जदि बुझिया पय ट्राई करूछि ऑटोमेटिकली पैसेज हमर सॉल्व हे जिवो तो जो माने एग्जाम देइछो आई होप यू डू योर बेस्ट and I hope you will get the best result. Thank you all.